میں سب سے پہلے تو آپ سب میڈیا کے ساتھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ایکسیلنسی کی مصروفیات کی منسٹر صاحب کی مصروفیات کی وجہ سے تھوڑا یہ لیٹ ہو گئے اور آپ کو انتظار کرنا پڑا. یہ قازقستان کے جو ٹرانسپورٹ منسٹر ہیں ان کی یہاں پہ آمد ایک ہماری میں سمجھتا ہوں کہ معیشت جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کی کوششوں سے ایک مثبت سمت میں جا رہی ہے, ان کی آمد بھی اسی کا ایک ثبوت ہے. اور یہاں پہ آ کے ابھی پورٹ قاسم اور کے پی ٹی کی پریزنٹیشن بھی دی گئی اور انہوں نے مختلف چیزوں میں اپنی دلچسپی کا اظہار بھی کیا, اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی قازقستان سے جو ان کا ڈیلیگیشن بھی آیا ہوا ہے یہ ایک انویسٹمنٹ بھی یہاں پہ کرے گا, اور کافی چیزوں میں انہوں نے دلچسپی لی. گوادر پورٹ میں بھی انہوں نے دلچسپی لی ہے, اور ریلوے کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی جو ہے قازقستان کی اس میں بھی انہوں نے اپنا دلچسپی کا اظہار کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں سمجھتا ہوں کہ قازقستان کے ساتھ ہمارے پہلے بھی روابط اور تعلقات جو ہیں مضبوط ہیں, اور ایکسیلنسی وزیر مواصلات کے آنے سے یہ ہمارے جو تعلقات ہیں یہ اور مضبوط بھی ہوں گے, اور ہماری معیشت جو ہے وہ بھی اور مضبوط ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو گروپ ان کے ساتھ انویسٹرز کا آیا ہے جنہوں نے یہاں پہ مواقع سنے بھی دیکھے بھی, اور یہ بھی یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں پاکستان سے بھی ہم جو ہے گورنمنٹ لیولز پہ ڈیلیگیشنز جو ہیں پہلے بھی جا رہے ہیں اور لیکن اب جائیں گے, اور دونوں ممالک کے تاجر جو ہیں یہ آپس میں مل کے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ وینچرز بھی ہو سکتی ہیں. پاکستانی تاجر قازقستان میں بھی جا کے انویسٹ کر سکتے ہیں, اور وہاں کے تاجر جو ہیں انہیں بھی ہم نے بہت سارے جو مواقع, اور خاص طور پہ ہماری جو ہماری منسٹری ہے میری ٹائم, اس پہ بھی ہم نے انہیں آفرز کی ہیں کہ یہ یہاں پہ آئیں اور ہماری پورٹس پہ انویسٹ کریں گے. بہت شکریہ. Well, assalamu alaikum. Good day, everyone. Today, we are here in Pakistan with a huge delegation, more than 170 delegates from Kazakhstan, representing different ministries, including Minister of Transport, Minister of Manufacturing, Minister of the IT and Agriculture, and also we have deputy governors from all 20 regions of Kazakhstan. It shows our commitment on boosting our economic relationship between Kazakhstan and Pakistan. Well, as we know, last year our Prime Minister visited Islamabad, and then His Excellency, our Prime Minister, put in front of our ministry task as a ministry responsible for cooperation with Pakistan, a task to boost economic relationship. So, and we also today discussed that we are working this work. We have a task by our His Excellency, our President of Kazakhstan, Mr. Kassym-Jomart Tokayev, to increase and to boost the economic relationship in the context of cooperating in pharmaceutical, in transport, and in light industry, in all other sectors of industry. So therefore, today our delegation is represented by different manufacturing sectors. That's the first thing. Second thing, we have a 2-day trip to Pakistan. One day is first day is in Karachi. It's more business delegation, and that was a big business forum. And second issue is tomorrow in Islamabad we are supposed to have an annual meeting of our intergovernmental commission with our colleagues, and all of our different ministers will be represented over there. With regard to the maritime issues, you know that in Kazakhstan, as it was given a strong task by our president of Kazakhstan, Mr. Kassym-Jomart Tokayev,
that we are representing ourselves as Kazakhstan as a bridge between Asia and Europe, and the task given to us, to our minister, is to become a big transit hub between Asia and Europe. From that perspective, we are also working with Karachi port. Last year, there was a special export of Kazakhstan aluminum to Pakistan. That was a first attempt, and today we are discussing of mutual investment opportunities to Karachi, Gwadar, or to Qasim port, and we are discussing two issues, I suppose. One is the investment issue. Second is the using of the existing capacity of the port capacities in Pakistan, in Karachi port and in Qasim port. These are the main issues that we have started to discuss. We have a huge delegation, both government and private sector in our team. They are here. They've been working here in ports for the last 3 days, and we have an idea how to work, how to cooperate further. These are the issues that we are focusing on and will be working on further. Thank you. सर सवाल है सर पाकिस्तान और कजाकिस्तान के दरमियान अगर एक्सपोर्ट है या तिजारत है उसका वॉल्यूम क्या है कितने डॉलर्स की हम एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ से क्या मंगाते हैं और हम यहाँ से क्या बेचते हैं Они спрашивают, что трейд между Казахстаном и Пакистаном, в каких этих они будут отправлять, сколько это будет, что будут отправлять, как это начнется, медиа спрашивают. देखिए जहाँ तक अभी तो बहुत मेरा ख्याल है कि हमारी बहुत वास्ट नहीं है ट्रेड, और बाकी हमारी पोर्ट्स तो अभी इन्वॉल्व भी नहीं है इस तरह बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें जो इन फ्यूचर अभी हमने डिस्कस भी किया है वो ये है कि ग्वादर से एक रेलवे ट्रैक जो है वो अफ़गानिस्तान के थ्रू वहाँ तक बिछाया जाएगा, और जिस पे हमारी ट्रेड होगी और बढ़ेगी, जिसमें इनकी रिक्वायरमेंट्स तो डिफरेंट चीज़ों की हैं, और अभी तो जो हमने इन्हें ऑफ़र किया वो अपनी पोर्ट्स पे इन्वेस्टमेंट करने का कहा है, और डेफिनेटली चूँकि इन्हें पोर्ट भी चाहिए और हम उस अपॉर्चुनिटी को कैश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि इनकी जो भी ट्रेड हो वो हमारी पोर्ट्स के थ्रू हो, और हमारी पोर्ट्स भी इंगेज होंगी और एक्टिविटी भी बढ़ेगी, और रेलवे ट्रैक की कनेक्टिविटी में इनकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है, ताकि उसके ज़रिए जो भी इनकी तिजारत हो दूसरे ममालिक के साथ भी इवन वो इनके कंट्री से हमारी तरफ आए और हमसे एक्सपोर्ट हो, और इनको जो चीज़ें इंपोर्ट करना हो वो भी हमारी पोर्ट से आए और इन तक जाएंगी। तो इसलिए ये इन फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत अच्छा एक प्रॉस्पेक्ट्स है, और अब इनका कल इन्होंने इस्लामाबाद भी जाना है और जाके वहाँ पे डिफरेंट मिनिस्टर्स उनसे भी मिलेंगे, और फिर इंशाल्लाह ताला बेहतरी की उम्मीद है, और इंशाल्लाह दे आर कीन, और इसीलिए ये कितना बड़ा डेलीगेशन लेके आए हैं कि इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने का, और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी करना चाहते हैं, और हमारे लिए भी मैं समझता हूँ कि वहाँ पे एक्सपोर्ट करने के बहुत सारी चीज़ों के मौक़े हैं, जिसमें डिफरेंट रॉ मटेरियल्स भी हैं, और हम वेजिटेबल्स वगैरह भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह जब यहाँ से भी डेलीगेशंस जाएंगे, जैसा कि इन्होंने ख़ुद बताया कि इनका एक बहुत बड़ा डेलीगेशन इनके साथ आया है, और वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यहाँ पे वो क्या इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, यहाँ से क्या अपने मुल्क के लिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आने वाला वक्त इंशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त है जी।